আজি আমাৰ 9 মাইলত থকা CRPFৰ পৰা আমাক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ব্লাড চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকে ইনভাইট কৰি আনিছে। তেওঁলোকে এটা ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছে, লগতে এখন সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ লগত অল আৰ্ম ফ'ৰ্চ যিমান আছে, আৰ্মি, BSF, SSB, CRPF সকলোৰ লগত সম্বন্ধ আছে। আৰু বাকী যিখিনি NGOs আছে, মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ, তেৰাপন্থ, বাকী অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেওঁলোকৰ লগতো আমি সহযোগ কৰি আমাৰ ৰক্তভঁৰালত যিমানখিনি ৰক্তৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি সেইখিনি ৰক্ত আমি মজুত ৰাখিবলৈ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়। আৰু মই এই সুযোগতে ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ যিসকল স্বেচ্ছাচাৰী ৰক্তদাতা আছে, তেওঁলোকক আমি আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ৰক্তদানৰ যিখিনি ভঁৰাল আমাৰ অসমৰ সকলো ব্লাড বেংকত বা ব্লাড চেণ্টাৰত যাতে মজুত হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট সহযোগ হ'ব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই CRPF 9 মাইলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ৰক্তদান শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। ये हमारे CRPF गुवाहाटी ऑर्गेनाइज किए हैं। आज का दिन हमने सिलेक्ट किया इसलिए कि 6 से 10 तारीख तक हमें हायर हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला अच्छे प्रोग्राम करने के लिए, गुड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी, जो कि समाज के लिए अच्छा रहेगा। हमारे ऑफिसर्स, हमारे जोन का ऑफिसर्स, हमारे GCs का ऑफिसर्स, हॉस्पिटल का लेडी डॉक्टर्स, इन लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जवान भाई लोग भी कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि खाली पेशेंट को हेल्प करने के लिए और पेशेंट को बचाने के लिए हमारा जो मेन मकसद है पेशेंट को टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, इसके लिए ब्लड का बहुत ज़रूरी पड़ता है। कभी कभार देखा जाता है कि जनता अपना फैमिली मेम्बर्स पागल हो जाते हैं एक बोतल ब्लड के लिए। यहाँ तो शहर में इतना नहीं होता है, ब्लड बैंक है, बट बाहर में गांव में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इनको ब्लड दे के उनको जान बचाने के लिए जो ओथ लिया है, तो उसको हम कंटिन्यू पिछले साल भी किया था और हर साल हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।